Hi everyone, welcome. And sorry, I was just still adjusting. Hi everyone, welcome. I'm here again to introduce you to my ninth champion. We are moving very fast towards finding our 100 champion moms. Sorry, I was just still adjusting. I think. Hi everyone, welcome. I'm here again to introduce you to my ninth champion. We are moving very right. I think there was an echo happening because of the Facebook. So I'm here with Mrs. Seema Tyagi. She is also a mom of Karteekka Tyaggi, who I announced just 2 days ago as one of my champions. And why she's here is because she's been showing up in my mom's group since I'm talking about the self-portrait movement in such a charming way, in such an unbelievable way that in spite of she's unstoppable in spite of whatever age she's growing in, and she is totally unstoppable. And then I found her story very, very interesting and inspiring. So I thought that bringing her on as a champion mom is definitely one of the things that we want to do to inspire many moms when their children are all flown away and they're doing their respective things, and still the life moves on for them. They are moving forward with their dreams. Nothing stops them. And Seemaji's story is just like that. Now, for my international audience, essentially, Seemaji speaks in Hindi. That's her comfortable language. And I want to respect that, because even if she can understand what I'm saying and she can speak her language, her comfort zone, her being a writer, her actor, she's a theater artist, she's an actor, she's an artist, she's doing so many things. Her feeling language is Hindi, and she's requested if it's okay. And I am not sure if the translation on Facebook is happening when she speaks in Hindi. But we will see in future if we can translate this into an English medium translation somewhere below. But at the moment, we will be taking that in Hindi, and I will do my best to translate her answer in a short form for the international audience that's watching it. But for all of us out here in India, we will enjoy her interview. Welcome, Seemaji. I am so happy to have you here, and you're absolutely an inspiring person, because this whole journey of mother is what I'm taking, and I'm very glad that you are here. And I would like to start by a story. I would like you to introduce yourself. Please go ahead and introduce yourself with Hindi as well. It doesn't matter. We're going to translate and help the other people who can't. So welcome, Seemaji. Go ahead and let's introduce yourself, what this journey has been for you. Hi, Shikha, and all the lovely members of the group. First of all, Shikha, I will thank you. आपके इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनाने के लिए मुझे इतना ऑनर देने के लिए. और मेरा नाम सीमा त्यागी है. मैं एक थिएटर एक्टर हूँ, और मैंने बहुत सारे प्लेस किए हैं. I acted in some films and some short movies and some corporate films and some big roles. Some small roles with some big personalities like Mr. Nasiruddin Shah. Lovely, lovely. And I started my acting career in my 50s, in my early 50s. Right. The journey was not so easy because I'm a diabetic, I'm a hypertensive. So I can't eat every type of food, and I have to take medicines at the time. So it was very difficult to carry my medicines, my food, or my some other things. But I did. Absolutely proud of you. They were not barrier for me because I have to pursue my interest, my talent. My interest, my passion. आपकी feeling language हिंदी में, आप हिंदी में बोलिए सीमा जी. करिए. And I will make sure the international audience understands it eventually. Your spirit is more important. मैं 2 टैलेंटेड बेटियों की मदर हूँ, जैसा कि आप जानते हैं. कार्तिका को तो आप जानते ही हैं. मेरी छोटी बेटी भी लॉयर है, और उन लोगों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है अपने पैशन को परस्यू करने में, बहुत ज्यादा. कार्तिका ने भी और छोटी वाली बेटी कनिष्का ने भी. तो अब इस एज में आप जानते हैं कि कुछ शुरू करना, इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी.
पर ठीक है, तब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मेरे बच्चे थे, मेरी फैमिली थी, तो मैं नहीं कर पाई। पर मुझे मेरी बेटियों ने कहा कि आप अब चलिए, आप थोड़ी फ्री है तो अब आप कीजिए। तो मैंने काफी काम किया, काफी कुछ किया, और अभी भी कर रही, और मैं चाहती हूँ कि मैं आखिर तक, जब तक मैं जीऊँ, मैं करती रहूं, लोगों को इंस्पायर करती रहूं। और मुझे देख के बहुत लोग इंस्पायर होते हैं। इतना अच्छा लगता है जब आपसे 20 साल छोटा कोई लड़का बोलता है अपने पेरेंट्स से कि मम्मी देखिए ये वाली आंटी है, मैं कहता हूँ आप इनके जैसा बनिए। मुझे इतना अच्छा लगता है। तो बहुत सम्मान भी मिला, बहुत प्यार मिला। और मैंने लेजेंडरी डायरेक्टर मिस्टर अरविंद गौर से भी के साथ भी काम किया है, और मेरे 2 और डायरेक्टर्स थे, उनके साथ काम किया है। तो माय जर्नी वाज वेरी गुड ऑफ इट। तो मैं बहुत खुश हूँ। After theater, why did you choose theater? Like once your daughters moved on with their professions in life, you decided to become an actress. क्या आपको हमेशा से एक्ट्रेस बनना था? You always wanted to be an और actress? नहीं, जब मैंने शुरू किया तो उस टाइम तो मुझे एक्टिंग की एबीसीडी नहीं आती थी, मतलब प्रॉपर जिसे कहते हैं। अब घर में या स्कूल में, कॉलेज में तो मैंने किया था काफी, पर उस समय इतना गैप आ गया था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बट मैंने, मेरे डायरेक्टर्स जो थे वो इतने कोऑपरेटिव, इतने अच्छे थे, और जो बॉयज गर्ल्स थे जो छोटे छोटे, उन सब ने मुझे इतना हेल्प किया, इतना सपोर्ट किया। और मेरे अकॉर्डिंग मुझे रोल भी मिलते हैं मेरी एज के अकॉर्डिंग, और वो काफी पावरफुल होते हैं। Right. तो मुझे इतना, मतलब मैंने इसलिए सोचा, और फिर मैं गाना चाहती थी। अगर मैं, मुझे मौका मिलता तो मैं शायद एक बहुत अच्छी सिंगर होती। अब तो मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज ऑफ एज एंड बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन। बट अगर मौका मिलता, और जैसे नेहा कह रही थी ना कि वो लोगों को एक इमेज उनकी बदल देती, वो मुझे भी लगता था कि मैं, अगर मेरी मेड भी आती है तो मैं उसे देखती हूँ और सोचती हूँ मैं इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकती हूँ। कि ये बिल्कुल है कि शी इज लुकिंग लाइक ए मॉडल। मैं अपनी बेटी से चर्चा करती हूँ कि अगर ये कहीं अच्छी फैमिली में या कहीं अच्छी जगह होती तो इम्प्रूव करके कैसी लगती। Right. बस दैट्स ऑल। No, but that's inspirational. आप बहुत ही inspirational हैं कि आपने acting journey ली after your daughters grew up and move forward, and you did not turn back to stop. Oh my God, my life is ended now. You know what will I do? My children are not there, because काफी mothers ऐसा feel करती हैं. A lot of mothers feel like that. Oh my God, नहीं now my कभी, children. हाँ सॉरी, जी, आप बोलिए. हाँ जी, नहीं लगता था कभी तो कि मुझे बच्चों को छोड़ना पड़ता है इतने लंबे लंबे टाइम के लिए। मैं आने में मुझे बहुत देर हो जाती थी, मेरे हस्बैंड को थोड़ा कम अच्छा लगता था। सरकार में एक बार उन्होंने बोला भी था, ओहो चुना भी क्या, एक्टिंग। पर मैंने माइंड नहीं किया, जो मुझे करना था, बढ़ना था, वो मैंने किया, क्योंकि मुझे बच्चों का भी सपोर्ट था सब, और धीरे धीरे हस्बैंड का भी सपोर्ट हो गया। तो इसलिए अब मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि कोई एज नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ है, करने का पैशन है, तो यू कैन डू एट एनी एज। कभी भी अपने सपनों को ऐसे किसी अलमारी में बंद करके मत रखिए, अपने मन में बंद करके मत रखिए, और जब भी आपको मौका मिले आप करिए। बहुत सी लेडीज शर्माती हैं कि अरे क्या कहेगी दुनिया, क्या जमाना कहेगा। अरे जमाना एग्जाम्पल देंगे। मुझे एक बार मैंने एक प्ले किया था जिसमें माय फेवरेट प्ले, तो उसके बाद वो एक न्यूज़पेपर ने भी उस प्ले को कवर किया था। उसके बाद मेरे एक रिलेटिव का फोन आया जो कि मुझे काफी क्रिटिसाइज करती थी कि वो मेरी कहने लगी, अच्छा बड़ा अच्छा चल रहा है और हमारे लिए भी कुछ करो, हम भी चाहते हैं कर। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स कहती हैं कि आप करती हो, हमें भी बताओ, हम भी करेंगे। तो मैं सबको इंस्पायर करती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनके लिए एक एग्जाम्पल बनती हूँ। इस एज में, यंग एज में तो बहुत लोग करते हैं, जैसे आप इतना अच्छा कर रहे हो शिखा। I'm not तो so young. ये सब, I might be looking, I'm still reaching 40, so I'm not so young as well. नो यू आर यंग, यू आर I'm यंग। so thank you for calling me बहुत young. अच्छा, आपने इतना But मुझे भी 20 साल हो गए, पर स्टार्ट मैंने बहुत यंग एज पे अच्छा किया था. प्रोजेक्ट कर रहे हो। Yes. बिल्कुल आपकी जी, आपकी थोड़ी वॉइस क्रैक हो रही है, पर जस्ट टू मेक इट लिटिल, just I'm just going to tell audience what you just said. And Seema ji was just mentioning that, she did not give up in spite of people not supporting her around her. She went ahead,
And something like acting at that age, and especially being in India, you reach a certain age, you think that your life is over, children are gone, what do you want to do with your dream, why do you want to do it? But she crossed that, and then she still went ahead to do it. And then she chose acting, and then she's succeeding in it as well as an actress. And then she's got into painting, singing, other things. So she's totally an inspiration that no matter where you start, you can start and still keep moving forward towards your dream. And that's what her message was. सीमा जी, आपको ये मूवमेंट सेल्फ पोर्ट्रेट का ज्वाइन करके आपकी क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवमेंट, हाउ कैन वी इंस्पायर मदर्स, व्हाट डू यू थिंक, एंड डू मदर्स फील लाइक दिस? अपनी सेल्फ इमेज जो मदर की खराब हो जाती है, and they start feeling that we are not pretty and we will not take our pictures, what will happen? All these questions that come in because we are not in touch with who we are and what we've become. Do you think that what do you think of this, joining this portrait movement, and what inspired you to put your portraits, आपने portraits हर रोज डाल रही थी, कॉन्स्टेंटली डाल रही थी, आपको क्या इंस्पायर किया इस पर्टिकुलर मूवमेंट के बारे में कि आप इसके अंदर जुड़ने के लिए आगे आई? ये आपने जो प्रोजेक्ट चलाया, ये मूवमेंट मुझे ज्वाइन करके मैं कहूँ इतनी खुशी है, मेरी लाइफ में एक और स्टेप में बढ़ गई हूँ मुझे लगता है। और इससे मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिलती है कि हम जैसे हैं हम आप अपने आप को उसी तरह एक्सप्रेस करें। मैं ईगरली वेट करती हूँ कि अब आप क्या टास्क देंगे, आपका कब आप हमें कुछ टेक्निकल चीजें कुछ सिखाएंगे। देखिए फोन से तो सेल्फी सब लोग लेते हैं, लेकिन जो आपने और टेक्निक सिखाई है उनसे मतलब अपने आप को एक्सप्लोर करना। और मैं वेट करती हूँ, आपने देखा होगा जो मॉर्निंग चैलेंज आपने दिया था, सबसे पहले उठते ही even without brushing my teeth, I clicked my pictures and post on the group. I also did. I Happy. also, without brushing, put my picture. I was sleeping because I have a small baby who did not let me sleep in the night. That's why that picture which I put was like I just woken up and the second one is about to wake up to like take over my morning as well, which is a pleasure. But that's what my picture was all about. You are lovely mentor. और इतने यंग लोगों की जो स्टोरीज हैं वो मुझे भी इंस्पायर करती हैं कि वो लोग कितना सब कुछ कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग देख के मेरी एज की मॉम्स, मेरे से बड़े मेरे से छोटे इंस्पायर हों कि जब मैंने किया है विदाउट फेवरेबल हेल्थ कंडीशंस एंड विदाउट फेवरेबल एनीथिंग, तो वो लोग भी कर सकते हैं। तो दे शुड परस्यू देयर ड्रीम्स डेफिनेटली। May I, if I'm don't mind if I ask your age right now? May I know your age so that the inspiration goes to absolutely more people? I am 60 plus. 60 plus. So yes. There's no stopping now. Basically, for anybody at whatever age they can do, even if it's as thing as getting into acting, you can still do it. Poetry, and the good thing about her is she reminds me of my father. For him as well, and for her, nothing is impossible to achieve. They will achieve it, they will get into it, they will pursue their dreams, and they've lived motherhood as well completely. Even if they got busy with motherhood and there was a break, they are moving forward to still live their dreams. And what she's been mentioning is that people reach up to her for inspiration, the same people who are criticizing her that why have you got into acting, etc. And then this is for my international audience. We're also in an Indian society at her age. Things are changing for sure. We're moving forward in great ways. Women are becoming more and more powerful at my age, younger than me, and we're totally taking over a lot of things. But at her age there were a lot of limitations for pursuing your career, and something like acting was definitely some not very easily chosen by people very easily. So it's quite inspirational that she still took this step and she went forward with what her gut was saying, what her instincts were saying. Seema ji, aapki dream kya hai? This movement is also about, it's called 100 self portraits 100 dreams. आपको self portraits लेनी है और आपकी 100 dreams क्या है? ये किस वे में आप इम्पैक्ट कर रही हैं दुनिया को? इट डजंट मैटर इफ योर इम्पैक्ट इज ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल एट दिस मोमेंट becoming big, or it's a very big impact already in going bigger. But what I want to hear is that what is your vision of impacting the world in a good way?
शिखा, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, तो मुझे क्लियर नहीं सुना जो आपने बोला। मैं आपको कहना चाह रही थी कि मैं पूछ रही हूँ आपसे कि अब आप किस वे में दुनिया को इम्पैक्ट करना चाहती हैं, अपनी आपका विजन क्या है, कि आपकी ड्रीम क्या है कि मैं काश ये कर सकूं इस दुनिया के लिए विद माय वर्क नाउ एंड नाउ दैट माय your children are amazing, they're already being lawyers of a very high authority in their own respective way and doing pretty well. अब आपकी ड्रीम क्या है? How are you going to impact the world around you? And that's what this book is about, 100 dreams. What is your dream? मेरे ड्रीम्स हैं कि एक तो मुझे कुछ बहुत अच्छे रोल्स मिले, Right, जिनको मैं खूब अच्छे से जी सकूं, right, और ड्रीम्स है मैं लेडीज के लिए कुछ कर सकूं, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए वुमन, right, आई एम ए मदर, right, आई एम ए वाइफ, आई एम एन एक्टर, बट अबव ऑल आई एम ए वुमन. right, right, तो मैं वुमेन के लिए कुछ करना चाहूंगी right. अभी भी, क्योंकि आप जानते हैं इट्स नेवर टू लेट. Absolutely. And I think you're अगर already doing it. आप इंस्पायर कर रही हैं, वो ऑलरेडी एक इम्पैक्ट है. जी, एंड अगर इस प्रोजेक्ट के थ्रू दिस प्रोजेक्ट वी कैन हेल्प यू फाइंड योर ड्रीम and help you to make it real. I would love, because all the women who are coming together here, if they can help you find your dream of helping other women and make it real, we would love to do that, Simaji. We would love to do that, and we are there for you to bring that dream alive. So, in the course of next 100 days, we will also find your dream, and let's see if we can launch it for you in next 100 days, and maybe the inspiration goes to a very formal level of inspiring more and more women. Um, so definitely we will help you with that. So Seema ji, I think we will try to wrap up this interview. And just to tell the audience that does not understand Hindi, Seema ji is a total inspiration for women of her age to still move forward. She started late, but she's not ending at a very low level. She will keep moving forward. She will keep growing ahead. And this little community that she's joined will make sure that we move her forward in the right direction to become the inspiration. And for a lot of moms across the world, and in India especially, where moms feel that our family traditions and etc. are not allowing us to move forward. I mean, she can do it in such a graceful way. It would be amazing to put you there in the book as a story, Seemaji. Yes, you want to say something, Seemaji? शिखा जी, यू आर ए ग्रेट मेंटोर, लवली मेंटोर. इतना अच्छा प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है. कहते हैं अक्सर, क्या कहते हैं कि लोग अपने लिए जीते हैं सिर्फ, बट यू आर द वन हु इज लिविंग फॉर अदर्स, टेकिंग अदर्स विद यू, है ना. एक मुझे कवि की दो कहानी, साहिर जी की कवि की दो कहानी पंक्तियां याद आती है. मैं अकेला ही चला था, लोग आते गए, कारवां जुड़ता गया. तो Absolutely. मैं कहती हूँ आपका कारवां बहुत बड़ा हो, अच्छे अच्छे लोग आपके इस प्रोजेक्ट से जुड़े और अपने आप को देखें वो कि भाई क्या है आपके प्रोजेक्ट के थ्रू. शिखा, यू आर सच ए लवली पर्सन. मैं आई कांट से एनीथिंग. थैंक यू सो मच शिवा जी. पर ऑलरेडी अच्छे लोग जुड़ चुके हैं, आप जुड़ हाँ जी, चुके हैं. और जुड़े. माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू. आपका बहुत बड़ा ग्रुप हो थैंक यू और बहुत सारे. जी, थैंक यू सो मैं मच. ये एंड पोइट्री के साथ भी मेरा बहुत लगाव रहा है. आई हेडेड अ पोइट्री मूवमेंट फॉर ऑलमोस्ट 12 years with Delhi poetry, and that has been a very important part of my life as well. So you just mentioned in poetry, but यू कैन डू, ये भी शुरू कर दीजिए पोइट्री वाला प्रोजेक्ट भी. मैं ये 100 mothers को, the inspiration is that these 100 mothers, this page and this book will become an inspiring book for Really, really great. 100 shades of a mother, 100 shades of a mother of all ages, famous, not famous, somebody who's working for every day. And these 100 shades will help mothers all over the world to not feel alone. And that's, I'm giving a friend to mothers in the world. क्योंकि रात को जब आपके बच्चे सो जाते हैं ना, they sleep in the night and everybody's quiet, that's the time the mother wakes up. She wakes up at that time and feels what's happening in the day, where am I, and these questions come into her mind. And at that time when she looks at this book and she opens a page, and suddenly Miss Seema Tyagi's page is there, and she looks at it and she's like,
it's not too late. It's not too late to actually start your journey. My work is done. At that night, she shuts, smiles, and goes off to sleep saying, fine, tomorrow I will start, because if Mrs. Seema Tyagi started it at the age of 50, it's not too late. So that's why this book is coming out, and your blessings are definitely needed, and your support is needed. And thank you so much. Would you like to say something before we wrap up, Seemaji? थैंक यू शिखा, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट, और Thank ऐसे ही करते रहिए, सबको अपने साथ जोड़ते रहिए, लोगों को इंस्पायर करते रहिए. बहुत अच्छा लगा मुझे. thank और you so फिर much. से मैं आप सबको नमस्ते Wrap- करना चाहूंगी, सब लवली मेंबर्स. आप प्लीज मुझे कोऑपरेट करिए हिंदी के लिए, है ना. शिवाजी, हो आप सकता है कुछ जहाँ पे आपको ये रीच आउट कर सकते हैं, कोई अगर आपका कोई लिंक है जहाँ से आप आपके साथ जुड़ सकते हैं, कोई फेसबुक पेज है, तो मैं आपसे लेके इस इंटरव्यू के ऊपर डाल दूंगी ताकि पीपल कैन कनेक्ट टू यू डायरेक्टली एज वेल. श्योर, लवली सीमा जी, आई कैन कीप मैं टॉकिंग. आपको लिंक दे दूंगी, भेज है ना, पोस्ट कर दूंगी आपको. आप जाइएगा नहीं, मैं लाइव से हट रही हूँ, थैंक यू. और लाइव से हटूंगी. आप एंड मत करिए मीटिंग, बट लाइव से हटेंगे. एंड see you guys tomorrow with my 10th champion. You know, for next 100 days there will be 100 interviews. 1st August is coming. From 1st August, next 100 days, we will find 100 champion. So I will see you soon, and thank you, Seema ji. It's a pleasure having you on board.